हमने लास्ट क्लास में किया था टेबल पर क्लास, केवल एक ही तो हुआ था। यस सर, एक हुआ था, है ना? यस सर। चलो, ये पूरा कंप्लीट हो गया था ना? इसमें कुछ बचा तो नहीं था नोट डाउन करने के लिए? हो गया था सर पूरा। और हमने जो क्लास टेबल बनाई थी वो थी सीडी। अब इसे ड्रॉप करना हुआ क्योंकि हर बार हम नई टेबल बनाने वाले हैं। चलो, अब सब चीजें रेडी हो गई, चलते हैं अगला। और इसका नोट टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास में all fields of a parent class will be stored in a child table। ठीक, तो अब चाइल्ड बनने वाली हैं और सारे रिकॉर्ड उसी में जाके सेव होने वाले हैं। देखें कैसे। यहाँ वही सीडी टेबल है हमारी पेरेंट वाली, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर इंटरनेशनल सीडी, एक्सटेंड सीडी, तो 2 फील्ड इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, इन पे कोई चेंज नहीं। स्पेशल सीडी वही है, इसमें 1 फील्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, और फिर आता है सीडी टेस्ट हमारा। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया सीडी का, और फिर स्पेशल सीडी का ऑब्जेक्ट बना के और इसके अंदर भी आर्गुमेंट डाल दिए चारों, और आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और इसके अंदर भी हमने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए। तीनों को हम सेव करें। अब सारी कहानी है मैपिंग के अंदर। इसमें चेक कर लो, सब अपडेट होना चाहिए जिससे नई टेबल बन के आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, डायलेक्ट ठीक है, अपडेट है, C0XML चलेगा। चलो, अब असली कहानी यहाँ पर है। ठीक, पैकेज को दे दिया, क्लास का नेम टेबल, एक बनेगी CD 30 के नाम से। ठीक है, जब मैं केवल किसका ऑब्जेक्ट सेव करने वाला हूँ, CD वाली का, लेकिन इसके अंदर भी डिस्क्रिप्टर वैल्यू, वैसे इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं डिस्क्रिप्टर कॉलम की, क्योंकि यहाँ पेड, यहाँ कोई कॉलम पेड में जाने वाला नहीं है। फिर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करा दिया, ये तीनों फील्ड। जब भी सीडी आप टेबल ऑब्जेक्ट सेव करोगे तो इसमें जाएगा। नाउ जब आप स्पेशल सीडी सेव करोगे तो ये 30 नाम की टेबल बनाएगा, इंक्रीमेंट हो गया। और वो देखो साथ इसके अपने तो हैं ही, साथ साथ किसकी प्रॉपर्टी मैप कर रहे हैं हम, साथ साथ पेंट वाली प्रॉपर्टी भी इसके अंदर डिफाइन किया, टाइटल भी ले रहे हैं, आर्टिस्ट भी ले रहे हैं, कॉस्ट भी ले रहे हैं, और न्यू फीचर इसका अपना आ ही गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसके अंदर तो जब मैं स्पेशल सीडी का सेव करूंगा तो एक टेबल किस नाम से बनेगी, स्पेशल सीडी 30 के नाम से। और जब मैं इंटरनेशनल सीडी का सेव करूंगा तो टेबल बनेगी इंटरनेशनल सीडी के नाम से, और इसके अंदर भी हम लोग एक्स्ट्रा डाल दें। तो सबकी मैपिंग अलग अलग है, मतलब अब 3 टेबल बनने वाली है, एक सीडी के नाम से, एक स्पेशल सीडी के नाम से, एक इंटरनेशनल सीडी के नाम से है, और तीनों के ऑब्जेक्ट अपनी अपनी क्लासेस में चले जाएंगे जैसे हम इसको चलाने वाले हैं। चलिए जरा MySQL से चला रहे हैं, और एक डायरेक्ट उसमें MySQL ले लेता है। क्वेरी में कोई खास चेंज है नहीं,
ठीक है। दोनों की आउटपुट जो होती है, दोनों की एसक्यूएल डायरेक्ट का काम क्या होता है, क्योंकि जो हमारा टारगेट डाटाबेस है उसके हिसाब से एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करना। और ये जो माई एसक्यूएल है सर्वर जो है, और ये जो ऑरेकल है हमारा, दोनों डाटाबेस की जो क्वेरी जनरेट होती है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए वो ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑरेकल डायरेक्ट दे दो वो भी ले लेता है, क्योंकि दोनों की एसक्यूएल क्वेरी में कोई ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी है ही नहीं, ना के बराबर, इसलिए चल जाता है। सर ये ने पासवर्ड चेंज नहीं किया, हैं? एच भी नहीं दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब लिखा है। कॉपी करने के बाद अरे ये जैक्स भी एरर दिखा रहा था। क्या एरर दिखा रहा? जैक्स भी, मैंने क्या किया? JAXB, वो बोल रहा था कि 13 में नहीं चलेगा, ये 11 से इसको डेप्रीकेट कर दिया है। कौन सा 13 में नहीं चलेगा? क्या 13 में नहीं चलेगा बेटा? हाइब्रिड का तो कोई 13 वर्जन है नहीं, तो आप तो जावा की कोई ऐसी क्लास यूज कर रहे हो। जावा का तो कोई हाइबरनेट का तो 13 वर्जन है नहीं, हाइबरनेट का तो 5.0 है, तो हाइबरनेट की क्लासेस तो चलेंगी। हाँ, ये होगा कि हाइबरनेट वाली जो क्लासेस है ना वो अभी जेडीके 8 ही सपोर्ट कर। हाइबरनेट वाला जो वर्जन है, मैंने कहा ना 8 से ऊपर अभी कोई गया ही नहीं है, स्प्रिंग भी नहीं गया है। जो हाइबरनेट की हम क्लासेस जो जावा फाइल्स है ना, वो जो बनी हुई है वो 8 में बनी हुई है। आगे बात समझ में? अब आप उसे एक से ऊपर के वर्जन में चलाओगे तो जो वर्जन नंबर है ना कंपाइलेशन फाइल में, याद है माइनर वर्जन, मेजर वर्जन होता है, वो रेंज के बाहर चला जाता है। तो ये हाइबरनेट की क्लासेस, स्प्रिंग की क्लासेस अभी 8 तक ही वर्जन तक आई है बेटा, ये ऊपर गई ही नहीं है। लाइब्रेरी हमने ऐड कर दी, चलो ठीक है। आप हमें चेंज करना है थोड़ा सा लगे। पासवर्ड में भी देना होगा। चलो 3 कमांड चल रही है हमारे पास। ट्रांजेक्शन किया हुआ तैयार रहेगी, चल गई, 3 बन चुकी है, चेक कर लेते हैं अच्छे से, रिफ्रेश आ गई। पहला रिकॉर्ड इसके अंदर, अब इसके अंदर चाइल्ड पेरेंट के भी आएंगे और इसके अंदर ठीक है साहब। तो अब आप पहले तो ये नोट कॉपी कर लीजिए, पहले तो वो याद कर लेना हम हेडिंग कौन सा डाला हुआ हमने, टेबल पर क्लास वाला, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, यानी कि हर एक की अलग अलग क्लास। पहला ये हो गया टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, और इसमें पहला नोट ये। फिर सीडी, इंटरनेशनल सीडी, स्पेशल सीडी को कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं, वही तीनों पहले वाली है। बस आपका जो चेंज आएगा वो आएगा सीडी टेस्ट में और प्लस एचपी, बाकी सब नोट करो पहले ये वाला जल्दी। हो गया ये? यस सर। सीडी की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल सीडी की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, सीडी टेस्ट ये कर लो।
यस सर, आपका यस सर। ये पूरी कोई जरूरत नहीं है, ये कर दो पूरी पहले वाली है। थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। अब आता है टेबल पर क्लास। इसका नोट parent class field will be stored in a parent class table and child class field will be stored in a child class। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कॉमन फील्ड तो आना ही चाहिए ना। जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट सेव करोगे तो उसके अंदर जो पेरेंट के फील्ड आए हैं उनकी वैल्यू तो पेरेंट में चली जाएगी, चाइल्ड वाले चाइल्ड। लेकिन जब चाइल्ड का फेच करोगे तो वो पेरेंट से आनी चाहिए, तो या तो पेरेंट का आईडी चाइल्ड में आना चाहिए या चाइल्ड का आईडी पेरेंट में जाना चाहिए। कायदे में देखिए चाइल्ड के अंदर ही पेरेंट का एक आईडी होना चाहिए, जैसी फैच करे उसी आईडी से पेरेंट से उठा के ले आएगा। गेम सारा मैपिंग का ही है, बाकी सब कुछ सेम है। ये पेरेंट के नाम से टेबल बनेगी CD31। अबे नहीं बना देगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पुरानी हमारी 30 बन गई होंगी तीनों की तीनों जो हमने देख ली थी ना। पेरेंट का फील्ड आ गया। अब यहाँ पे लगाया जॉइंट सब क्लास, यहाँ पे आएगा जॉइंट सब क्लास स्पेशल CD और फिर और यहाँ पे भी हमें सेव कर लेते हैं। तीनों सेम है, बाकी बस CD टेस्ट में हमने करना है। ये ट्रांजैक्शन बिगिन कर ली है, ये CD का ऑब्जेक्ट, ये स्पेशल CD का ऑब्जेक्ट और ये इंटरनेशनल CD का ऑब्जेक्ट। वैल्यू डाल दी, तीनों को हम सेव कर रहे हैं। चलो जरा इसे चला
पहला आईडी आपको सेव लगाना। ठीक, इसमें 3 रिकॉर्ड आ गए कि नहीं आ गए? ठीक, 2 कहाँ से आए? चाइल्ड से। एक इसका हमने अपना सेव किया था। अब इन दोनों में एक एक रिकॉर्ड होना चाहिए। 31 में एक रिकॉर्ड है। ठीक, और ये आईडी देखो 3 है, और इसी के अंदर अब हम 31 में जाए, आईडी 3 1 2 3। अब ये 3 वाला 3 से उठा लेगा, 1 2 वाला 2 से, 1 वाला 1। सेम आईडी सबने कॉपी किया, ऐसे यहाँ पे भी आएगा। ठीक, 31 ये रहा हमारा दूसरा। कि 2 क्यों आया? 1 आना चाहिए। अच्छा, 2 वाला रिकॉर्ड उसके हिसाब से आईडी मैप किया ना, आईडी उसी का आईडी डाला ना इसमें। देखो ये पेरेंट का आईडी है, सारा का सारा ये जो आईडी इसमें आ रहा है ये सब पेरेंट का आ रहा था। 2 उसमें डाला और 3 उसमें डाला। ठीक, तो पहले नंबर, दूसरे नंबर पे हमने इसे सेव किया था, तीसरे नंबर पे हमने उसे सेव किया था। तो मैंने कहा था ना पेरेंट का आईडी आएगा। ये देखो ये पेरेंट की है 1 2 3, तो इसका अपना रिकॉर्ड 1। जब आपने पहले दूसरे चाइल्ड का डाला तो 2, तो वहाँ पे 2 चला गया, 3 चला गया। जब उसे फैच करोगे तो पेरेंट से 2 के हिसाब से रिकॉर्ड को फैच करके ले आए। पेरेंट वाले आईडी ही चाइल्ड के अंदर जाके स्टोर किए गए हैं। तो पेरेंट वाले फील्ड पेरेंट में चले गए, चाइल्ड वाले फील्ड चाइल्ड। ठीक, अब इसमें नोट कर लो पहले छोटा सा। That's all.
कौन जाती है वही पढ़ाई था। Cargo close. Yes, sir. चलो Hibernate ये क्या अब हम आपको पहले करा देते हैं Hibernate कलेक्शन और इसके अंदर पहले हमें छोटी सी एनोटेशन के थ्रू आपको प्रोग्राम चलाना है। ऑलमोस्ट वैसी ही एनोटेशन है डिटो। अब हमें HBM फाइल की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ CSV फाइल और डाटाबेस की डिटेल तो हमेशा वाया इसके थ्रू ही लेनी होती है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हमारे पास सब कुछ सेम है। और बस यहाँ पे जहाँ मैपिंग में आप HBM फाइल का नाम देते थे, अब मैपिंग में आपको उस क्लास का नाम देना पड़ेगा जिसमें आपने एनोटेशन लगाई हुई है। form.dpet ठीक, ये वही कोर्स टेबल है, उसी में रिकॉर्ड जाएगा जो हमने पहला वाला चलाया था। बस वाया किसके थ्रू चला रहे हैं हम, वाया एनोटेशन चला रहे हैं। ठीक है, नाउ चेंज कर दें बेटे। सिस्टम HBM कौन से दूर रहो इसमें प्रोसेस पहले से करनी है। भगवान जाने माइक उठा के पूरे घर की कारस्तानी हमें क्यों सुनाते हैं, हमने क्या बिगाड़ दिया उनका। म्यूट करके नहीं बैठ सकते। चलो फिलहाल एक नई टेबल बना देगा, वैसे चाहे तो पुरानी वाली भी थी। अब देखो एंटिटी वही टेबल याद होगा, जेपीए याद आ गया होगा। ठीक, और यहाँ पे हम कॉलम नहीं दे रहे, जिस नाम से फील्ड होंगे उसी नाम से मैपिंग हो जाएगी। देना चाहो दे दो कॉलम के नाम भी, नीचे दे रखे हमने कोर्स आईडी, कोर्स नहीं, ये लो साथ आईडी दे दिया, जनरेटेड वैल्यू हो गई, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और कोर्स आएगा। सिमिलरली दूसरा कोर्स नहीं, नलेबल फॉल्स नहीं डाल सकते। ये छोटी सी एनोटेशन हमने यूज करी है। ठीक है ना, उसके बाद मेन में आ गए, मेन फिर सेव कोर्स। ठीक है, ये वही पहले वाला मेन है, वही पहले वाला मेन है, सिर्फ 3 रिकॉर्ड आपको इस डाटाबेस में जाके सेव होते हैं। ये रहा सेव कोर्स, याद होगा, ये पुराने वाला प्रोग्राम है जो आपने कॉपी किया। यस सर। पता नहीं प्रैक्टिस करता नहीं, लेकिन ये वही पुराने वाला प्रोग्राम है। सेव, कोई चेंज नहीं है, मेन क्लास बिल्कुल वही है, बस क्या चेंज हुआ इसमें, ये क्लास और HBM फाइल का है।
और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। तो फिलहाल मैं 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ और एक नई टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, और टेबल का नाम होगा केस 27, जो पहले से हमारे पास बनी हुई नहीं। तो इसे वाया एनोटेशन चलाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। ये रहा गेट सेशन फैक्ट्री, सेशन निकाल लिया, डिटेल का है गेट सेशन फैक्ट्री पानी वाली, बिगिन ट्रांजेक्शन, पोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट वैल्यू सेट करी और सेव करते चले गए। इसमें कुछ भी चेंज नहीं। So just add a haircut today. Just let me know what you think, whether you like it or not. अच्छा, हमने पिंका में भी कमांड चला रखी होगी, देखिए मेन में शायद चला रखी हो। सेव कोर्स और ये रहा लिस्ट कोर्स। बाकी अपडेट डिलीट लिस्ट सब कुछ सेम है, तो इसे कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस डाटा भी जाके चेक कर लेते हैं। कोर्सेज के नाम से या 3 रिकॉर्ड आ गए, 1 2 3। एक बार सारा क्या हुआ, इस बार हमारी एचटीएमएल फाइल गायब हो गई। डिट्टो वैसी ही एनोटेशन है जैसे हमने के अंदर यूज की थी। तो आप इसमें सिर्फ क्या कॉपी करनी थी, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ करने की जरूरत। कल वगैरह जल्दी से कॉपी।
So the second tip for you to improve your coding skills is learn how to search, right? So learn how to search. So let me actually show you what I mean. So when I mean learn how to search is how to use Google effectively, basically. So you see, most of us, you might think that we software engineers, we know everything from the top of our head, and we learn every single line of code and memorize every single line of code. That's not the case, right? That's not the case, right? So what you need to understand is, as soon as you have the foundation, right? As soon as you grasp the foundation, then the rest will be easy, right? Because you can just look at some code and say, oh wow, this is what I need. Or if you are stuck, then you can simply search, for example, how to solve a particular problem based on the difficulties and the problems that you are facing, right? So learning how to use Google is very, very, very important, right? So sometimes, and you know that we software engineers, we use Stack Overflow, right? So you might use it, a lot when you start your career, because you for example might not know how to use lists properly or maps properly or know the actual API. But as the time goes, you tend not to use Stack Overflow as often, really, when it's something that you haven't come across before. That's when you start use, for example, Stack Overflow. So I'm not saying that I use Stack Overflow every day, which I don't, right? So only when I'm faced with problems which I've kind of didn't encounter before, right? Because if I encountered them before, then the next time that I'm faced with the same problem, I actually know, how I solve it, right? So make sure to, learn how to search for your problem effectively. Like, so Google is a very powerful tool that we software engineers use on a daily basis, right? So, for example, if you want to implement something that you've never done before, so the first thing that you might even do, or if you haven't been doing it, is how to implement X or X example, right? For example, let's say you want to implement Stripe functionality to take payments from users and then charge them, right? So you might say Stripe example, right? Java or JavaScript or Go, right? So you find lots of examples and then you can start from there. So learning how to use Google and search effectively is a skill that you must have. Third, as you search, right? So as you search, you will come across with some code, right? Some code. And it's very important for you to learn how to read other people's code, other developers' code. So you see, sometimes you might implement something, but it's not necessarily the actual best solution or the best way of solving it, or the best, or actually the more efficient way of solving it, right? Someone already has solved the problem that you are trying to solve, right? So you learning how to read other people's code is very, very important. So this is where Yes, sir. we are going to perform a post, right? So this is the actual मेन की कोरियोग्राफी आप दोनों एज रिलेशनशिप करके बता रहे हैं कंपोनेंट टैग के थ्रू, और वाया एनोटेशन भी हम इसे करेंगे, वाया रिलेशनशिप भी करेंगे, 1 to 1 1 to many वैसे भी करती हैं। और यहाँ एक हमें कंपोनेंट टैग भी दिया है, ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर ले, ये भी वाया एनोटेशन ही हम कर रहे हैं। Association component tag वैसे this is just one option. This is just an option. So learning how to read other people's code is very important. स्टूडेंट का आईडी, नेम और एड्रेस क्लास टाइप ऑब्जेक्ट, एक एज रिलेशनशिप। ये काम एनोटेशन से भी हम कर सकते हैं अच्छे से, आगे कराऊंगा मैं आपको।
तो स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम और एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है क्या एज रिलेशनशिप जो इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे बेटे, बाकी गेटर एंड सेटर। फिर ये हमारा एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड और इनके बेटे गेटर एंड सेटर मेथड। अब ये वाली काम, ये काम एनोटेशन से भी होगा। टेबल बनेगी स्टूडेंट 20, आईडी टाइप लॉन्ग स्टूडेंट आईडी, क्लास ऑटोमेटिकली आईडी में हो गया। फिर पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग टाइप की और ये कॉलम का नाम स्ट्रिंग है। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट एड्रेस और यहाँ पे क्लास किसका है एड्रेस। और फिर इसी के अंदर हमने देखो यहाँ टैग कौन सा लगाया है कंपोनेंट टाइप का। आगे जाके यहाँ हम लगाएंगे 1-to-1 रिलेशनशिप वाला टैग, इसके थ्रू भी करेंगे। तो एड्रेस आ गई क्लास, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी यहीं पर इंटरनली डिफाइन करेंगे और लास्ट में जाके तो ठीक। तो अब आ जाओ मेन के अंदर, बिल्कुल सेशन पैकेज निकाल दिया, वो आप जानते ही हैं। सेशन शुरू कर दिया, ये बनाया एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट, ये बनाया स्टूडेंट क्लास, डाल दिया इसके अंदर एड्रेस और इसे हमने सेव कर दिया। ठीक, अब जो हमारे पास आप देखेंगे मैपिंग में हमने यहाँ पे टेबल दिए स्टूडेंट 20। क्या हमने यहाँ पे कोई एड्रेस नाम की कोई टेबल दी है? इसका मतलब क्या होगा, चाइल्ड के फील्ड सारे के सारे किसमें जाके चले जाएंगे, पेरेंट के अंदर जाके स्टोर होने वाले हैं। दैट इज फॉर कंपोनेंट। यहाँ देखो कोई हमने चाइल्ड के चाइल्ड रिलेशनशिप तो है ही नहीं, यहाँ पे केवल हैज अ रिलेशनशिप है, वेरी ठीक है साहब। तो एड्रेस की कोई एक दे रही है हमारी क्लास, यहाँ पे टेबल नहीं है, यानी कि आपके एक ही टेबल बनने वाली है और सारे एक ही फील्ड और सारे के सारे फील्ड you should know how to do that inside out. So learn lists and maps, and obviously you've got stacks and queues and binary trees and all the other good ones, which you also should have. You should know basically how to work with them. But as you start, you should know lists and maps, right? So once you know the how to use these data structures, this now allows me to move to my next point, which is solving programming challenges, right? So let me actually show you. So there is this website called LeetCode. So you've got LeetCode, you've got Akarank, and you've got many other ones. Basically, what these platforms allow you to do is to increase your level of programming in a way of how you think about solving problems, right? How you think, so for example, if you're applying for Google or Facebook or any of these top tech companies, you should start using ये हमने एक हैज रिलेशनशिप बनाई है और इसको हमने 1-to-1 से किया था, यहाँ भी करेंगे एनोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं हम इसे, और वाया इसे हमने 1-to-1 टैग करते हैं। ठीक, चलो प्लान से निकालो, सीएलजी की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप कर ही लोगे आप। In general, if you are into programming, knowing how to solve problems or challenging problems will help you to become a better engineer, because you will start to think in a different way and approach problems from various different angles, right? So you should start, using these platforms to solve coding challenges. So next, I think it's very important for you to also build your network, right? So build your network, know people from different backgrounds, know people that know different technologies, right? And the best way for you to do that is to, attend to hackathons, right? Or, events, right? Meetups. So be involved, right? Because you will find in your career, as you progress, right, these people will be the ones that will help you some way or another, right? So you might meet someone, and that person might be your mentor, for example, a certain technology. Then building the network is amazing, right? You should build your network, right? And also, as I said, if you haven't joined the private Facebook group or the Discord group, go ahead and join, because the community is growing and we are always engaging and
helping one another, and you should be part of it. So the next thing that I want you to do is to go and create a GitHub account if you haven't got one, right? So when you create a GitHub account, what I want you to do is every single problem that you solve, right, or every single project that you have, put them on a repository and make it public, right? So this way, what is good about it is you can showcase your work. So I remember once I went for an interview and I printed out, screenshots of web applications and desktop apps that I've done in the past. And I was like, you know what, I'm not being able to work with these technologies, but I go out myself and I try and implement these things, and this is how I keep on learning, right? So that way I've showed an interest, right? And then they've even asked me, what's your GitHub account? And like literally right there in front of me, they went and they searched for my GitHub account, and they saw the projects, and they said that they saw that I wasn't actually lying, right? So make sure to have a GitHub account. And then the final two things that I want to touch on is don't stick to one language, right? So you might learn, for example, Python or C# or Go, for example, or Java, and you might think that that's the language that you're going to stick with it forever. But let me tell you right now, if you are a software engineer, you should be able to program in any language, right? So once you master one language, then the rest will be fairly easy, right? For example, if you master Java well enough, or C# or C++, then the rest will be easy enough, because all the other languages, they've took away all the complexity of these, mother languages, and they made it easier, right? So don't stick with one language. And finally, go ahead and learn how to use your terminal. So terminal, knowing how to use your terminal will help you some way or another. Trust me, like if you remote SSH servers, and you definitely should know how to use the terminal and the basics of Bash, right? So I've got a course that I've released, I think it was 2-3 weeks ago, teaching you how to use this effectively if you have never used it before, right? So know how to use your terminal properly, right? And Bash commands. And I think I've missed something here, so I wanted to show you that. Also, you see on GitHub, right? So I was saying that you should know data structures, right? So right here, so this is the actual trending repositories on Git. So right here, you can see that there is this the algorithms Java. So right here, and basically you can see that they have like lots of algorithms. But let's click on sort, for example, and you can see like quick sort, selection sort, shell sort, comp sort, heap sort. So let's click on heap sort, and this is where, for example, if you were to attempt your implementation, then you can go and see, oh, this is how they do it, right? So in today's era, the internet and smartphones have become an integral part of our lives. We use our phones for almost all of our day-to-day tasks. if you don't quite understand how they do it, you can clone this, open up your IDE, and then debug step by step and inspect the code, and that's how you're going to learn, right? So knowing how to read other people's code is very important. And finally, I almost forgot. So knowing how to use your IDE will take you a long way, right? So just imagine you know how to code, but you don't know how to use your IDE, right? So it might take you 10 minutes just to do something, whereas with me, if I know, well, actually I know my IDE inside out, it will just take me 1 minute, right? So you see the advantage there, right? So knowing how to use your IDE efficiently, how to use your IDE, and full stop. So this is how you are going to करो बाकी कल करा तो इसमें